Revelation 1 chapter 3 काढून दाखव. ऐकत सुनो, आजच्या संदेशाचे नाव आज का संदेश का नाम The second coming of the Lord Jesus Christ. दुसरे पावटी येवचो आसा नाजो जेजू ख्रिस्त. Today's topic of the message is the second coming of Lord Jesus Christ. आज का संदेश का नाम है दूसरी बार आने वाला है नासरी यीशु मसीह. भावार्थ्यांक Believers, विश्वासियों को 75% कुशलकाची खबर. it is a thing of happiness that is 75% is happiness. 75% यानी खुशी की बात है. 25% But the rest 25%, 25% बिरादीची खबर. it is a thing of fear डर की बात है. भावार्थ्यांक for believers. विश्वासियों को 100% 100% 100% बिरादीची खबर a thing of fear डर की बात है संसाच्या मनशांक. for the people of the world. संसार के लोगों को. आम्ही किती सांगला? What did Pastor say? पास्टर ने क्या कहा है? 100% 100%. 100% बिरादीची खबर It is a fearful thing ये डर की बात है संसारच्या मनशांक. for the people of the world. संसार के लोगों को. 75% But the 75%, 75% कुशलकाची खबर a thing of happiness खुशी की बात है आमका भावार्थ्यांक. for us believers. हमें विश्वासियों को. 25% But the rest 25%, 25% भावार्थ्यांक it is for believers. विश्वासियों को म्हणजे आमका That is for us. यानी हमें बिरादीची खबर. Thing of fear. डर की बात है. आता 25% बाहेर आहा. The 25% is out from us. 25% बाहर है. जेन्ना पासून आम्ही उतरा गोट दोतचे ना तेन्ना पासून 100% आम्ही जावचे ना. Unless and until we don't hold on to the word of God, we won't be 100%. जब तक हम यानी परमेश्वर के वचन को घट नहीं पकड़ेंगे तब तक 100% नहीं बनेंगे. कंप्लीट जावंक जाय आमच्या जिवितान 100% आम्ही ताजेस. Our life should be complete. That is 100% that we belong to Him. हमारा जीवन पूरा होना चाहिए, 100% होना चाहिए. हम उसी का हैं. Jesus is coming for his people, holy people. जेजू येता पवित्र मनशाक आपल्या मनशापासून. Jesus is coming for His people. That is holy people. जेजू ख्रिस्त साकार गा. खोलाय वयचे पयले. If you're going deep into it, गहराई में जाने से पहले दोन स्क्रिप्चर आयतितले ना पूण वाचून दाखोय आमकां. कितें सांगता? रेव्हलेशन 1 चॅप्टर वर्स 3. जुआवाक प्रकाशवणी 21:1-3. सगळे ऐका. येवच्यो आसात त्या गोडण्यांचो काल लागीं पावला. देखून जी कोण हे बाकीत वाचतात आनी जी कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयल्लें आसा तें पाळटात तीं सुभागी. त्या लुगारार वाचचें बरोवंक ना. it is not written in this way. उस जगह पर ऐसे नहीं लिखा है. जो कोण फेलोशिपाक येता तो सुभागी हें बरोवंक ना. Whoever comes with the fellowship, that he is blessed. ये नहीं लिखा है कि जो कोई कलीसिया में आता है वो आशीषित है. Blessed is he who hear and read. ऐकता ओ वाचता ऐकता. वाचता कितें वाचता? न्यूज पेपर न्हय. वाचता देवाचें उत्तर. The word of God said, blessed is that person who listens not to the newspaper but the word of God. धन्य है वह इंसान जो सुनता है और पढ़ता है यानी क्या न्यूज़पेपर नहीं. पास्टर हांव वाचूं नको म्हाका शिकप ना. You may say, Pastor, I'm not educated, I do not know how to read. शायद आप पास्टर को पास्टर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. त्या मैं लुगारार बरयला ऐक. Over there it says, listen. उस जगह पर लिखा है सुनो. ऐकता. You hear it. सुनते हैं. कान दिल्यात ऐक. Ears are given to you, listen to it. कान दिया है सुनने के लिए. नो एक्सक्यूज तुका सुटका ना. You do not have any excuse. आपको कोई बहाना नहीं है. रोमन 10:7 कितें जाता? आयकून ओयो ना कितें देवाचें उतर. तूं जाता बेसांवाचो. You become blessed. आप आशीषित होते हैं. सुरुवात तुजी जाता ह्या लुगारार.
The starting happens in this place. आपका शुरुआत इस जगह से होता है। तू तोर बेसांचो जावं कना If you are not blessed, अगर आप आशीषित नहीं हुए हैं तुका कांय फायदो मेळचो ना जेजू कुपाचेर येता पळय तेन्ना then you won't receive anything when Jesus will come on clouds. आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा जब यीशु मसीह आएंगे बादलों में तब। बेसांव म्हणजे कसलें बेसांव Blessing means what type of blessing is it? आशीष यानी कौन सी आशीष? पवित्र पुस्तक बेसांची खबर पयशांवर उरलें पवित्र पुस्तक उरलें तें बेसांव जाणा ताजें आजीरपण The Holy Bible does not speak about the money, but it speaks about His presence. बाइबल आशीष यानी पैसे के बारे में नहीं कहती है, उसकी उपस्थिति के बारे में कहता है। चोचराय दोरात Take heed. सचेत रहो। Revelation 3 chapter verse 11 चोचराय दोरात वाच चोचराय दोरात सचेत रहो। It says, take heed. तुजो मुकुट कोणूय व्हरोत Someone may come and rob your crown. आपके मुकुट को कोई चुरा के न ले जाए। चोचराय दोर Take heed. सचेत रहो। तुजो मुकुट कोणूय व्हरोत Someone may come and take your crown. शायद आपके मुकुट कोई ले जाए। खंय हा मुकुट So now where is your crown? मुकुट कहाँ है? बावड त्यांचे एक बावड त्यांच्या तकलेचेर हा मुकुट It is on the forehead of each one's believer's life. हर एक विश्वासी के सर पे है मुकुट। बावड ती देवाचे उतराचेर बावड धरून जियेता Believers are the one who keep faith over the word of God and they live according to it. विश्वासी परमेश्वर के वचन पे विश्वास रख के जीते हैं। सो तुझ्या मुखात हें उतर उलयलां आमी सत मानता Now the word has been spoken before you and we believe on it. और वो वचन आपके सामने बोला गया है और हम विश्वास करते हैं। वाचून दाखय सिस्टर कोंकानी जुवावाक प्रकाश वणी आवेसवर 3 बोल 11 हांव येवचो जालो कोण सांगता Who is saying this? कौन कहता है? नाजो जेस ख्रिस्त उलयता Lord Jesus Christ says, नासरी यीशु ख्रिस्त कहता है, हांव येवचो जालो the time has come that I will come. मेरा आना हो गया। दुसरे पावटी ते It is of the next thing. ये दूसरी बार Next coming. सेकंड कमिंग हालेलुया आता जेजू ख्रिस्त Now Jesus Christ, अब यीशु ख्रिस्त कुपाचेर येतलो He will come upon clouds, वो बादलों में आएगा, पातक्या पासत न्हय not for sinners, पापी लोगों के लिए नहीं। कोणे क्राउन मुकुट घेतला पळय तांच्या पासत but for those who have received the crown. जिन्होंने मुकुट लिया है उनके लिए। कितें सांगलां जेजू क्रिस्तान What did Jesus say? यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा है? कितें जाता पोत्तून वाचून दाखय आमकां हांव येवचो जालो आमेन तुका आसा तो भावार्थ सुरक्षीत सांबाळ प्रॉब्लेम बावार तुका हा The faith which you have, विश्वास जो आपको है सांभाळून दवर keep it properly. उसको संभाल के रख। कालचो बावार आयज कोंताकीना Yesterday's faith will not be used today. कल का विश्वास आज नहीं चलेगा। आयजचो बावार आयज Today's faith is for today. आज का विश्वास आज ही। हालेलुया कितें सांगता What does it say? क्या कहता है? सांभाळून दवर Keep it. संभाल के रखो। तेन्ना 75% आते 100% जातले बावार सांभाळून दवरीत जाल्यार If you keep your faith properly, then whatever is 75% will turn into 100. जो अगर आप विश्वास को संभाल के रखोगे तो जो 75% है वो पूरा 100% हो जाएगा। कंप्लीट कर तुझ्या जोयताचो मुकुट तुजे कोटचो काढून कोणाकूच दिवं नाका हांवें इंग्लिशीन सांगून इंग्लिशीन आनी बरें आहा कितें सांगलां तुजो मुकुट कोणाकूय काडूंक दिनाका अरे वत्म्याच्या रुपान मुकुट हा मनशाच्यान काडूंक जायना फकत जाता सैतानाच्यान सजमो गेला जाल्यार जेजू म्हणटा कोणाकूय काडूंक दिनाका Over here it says, let no one remove your crown from your head. The man cannot remove this crown, but only the devil. आत्मा के रूप में आपके सर के ऊपर मुकुट है तो फिर इंसान नहीं निकाल सकता है, सिर्फ शैतान ही निकाल सकता है। किसी को काटने के लिए मत दो। केन्ना When? कब? जेन्ना तूं बावार सुट्टा It is when you lose your faith at that time. जब आप विश्वास को छोड़ते हैं तब। जेन्ना तूं तुजो बावार सोडटा जेजू क्रिस्ता वयर The moment when you lose your faith over Jesus Christ, जब आप अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर से छोड़ देते हैं कोण येता
Who comes? कौन आता है? शैतान येता The devil, he comes. शैतान आता है, मुकुट काढता. He takes away the crown. वो आपके मुकुट को निकालता है. मुकुट काढा म्हणजे तुका मान उडयता, तुझे जीवित खबार गुत्ता. To remove the crown means to kill you. He destroys your life. वो मुकुट निकालना यानी आपको मार डालता है, आपको नाश करता है. जायते बावटे जीवितान सुरू झाला शैतानाचे झूज. In a lot of believers' life, it has started the war of devil. बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में यानी लड़ाई शुरू हो चुकी है. खरो बावरती But a true believer, सच्चे विश्वासी मोग कोता एकामेकाचो. he loves one another. वो एक दूसरे से प्रेम करता है. खरो बावरती A true believer, सच्चे विश्वासी दुसऱ्या भाव भयणा करेक्शन कोता, करेक्ट कोता. they correct other brothers and sisters. दूसरे भाई बहनों की गलती दिखाता खरो है. बावरती A true believer, सच्चे विश्वासी दुसऱ्यांक सकल उडयना. he does not put others down. दूसरे को नीचे नहीं गिराता है. जेन्ना तू दुसऱ्यांक सकल उडोवंक लागता, The moment when you start to put others down, जब आप दूसरों को नीचे गिराने लगते हे हैं, दाखवता so this shows ये दिखाता है तू सारको ना. that you are not correct. आप सही नहीं है. मुकुट ऑलरेडी वचपाचे वाटेर आहा. Already the crown is on the way to go from you. और मुकुट यानी जाने के मार्ग पे है. खरो बावटेचे जीवित कशें आसूंक जाय. So what should be a life of a true believer? सच्चे विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए? एकामेका करेक्ट कोता तशें जीवित आसूंक जाय. A life which corrects one another, such kind of life. एक दूसरों की गलतियों को दिखाते वैसे जीवन होना आनी चाहिए. खरे बावट्यांचे जीवित कशें आसूंक जाय. And what should be a life of a true believer? और सच्चे विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए? चूक मानून घेवंक आनी रिपेंट जावन जीवित जिवंक असले जीवित आसूंक जाय. The life of the believer who accepts the mistake and repents and lives their life in such way is the life of a believer. गलतियों को मानकर और उस अंगीकार करके यानी जीवन जीने वाले जैसे होने चाहिए. हालेलुया. कुशलकायची खबर. A thing of happiness. खुशी की बात है. जेजू येता. Jesus is coming. यीशु आने वाला है. तू भावना बावरच्यान. There is no doubt for believers. विश्वासी कोई शक नहीं है पण इसमें. आमचीच आमी तपासणी करूंक जाय. But we ought to test our own self. मगर हमारी ही परीक्षा करनी चाहिए हमें. माझे जीवित मेळे आसताना When my life is not correct, मेरा जीवन अशुद्ध रहते हांव दुसऱ्यांक बोटां दाखयता. I point out to others. मैं दूसरों को उंगली दिखाता हूँ. हांव स्वर्गार वयतलो. Will I go to heaven? क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? जेजू नवें येतलो, म्हाका कितें फायदो जातलो? So second coming of Jesus, will I get anything from it? यीशु नए से आएंगे तब मुझे कुछ लाभ होगा. ही ती 25% म्हणटा ती भिरांतीची खबर. And this is the 25% of fear. और ये है वो 25% जो डर की बात है. 100% तक 100% आमी बावटे आसूंक जाय. We believers must be 100%. हम विश्वासी 100% होना चाहिए. कशें जाता? How do this happen? कैसे होता है? उतर आयकला, You heard the word, वचन को सुना है, उतरा गोड डोलला, you hold on to that word, वचन को घट पकड़ा आनी है उतरा पण तू जिवीत येता. and you live your life according to that word. और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं. उतरा म्हणजे कितें? According to the word means what? वचन के अनुसार यानी क्या है? ऐकात. Listen, सुनो. थोडे बावट्याच्या जिवितान अशें आहा. it is in this way in some believers' life. कुछ विश्वासियों के जीवन में ऐसे है. म्हाका कोणाचेच हितून पडोवंक नाका दुसऱ्या बावट्याच्या जिवितान. I don't want to fall in other believers' life. दूसरे के जीवन में मुझे नहीं गिरना है. हांव आनी बायबल, I and my Bible, मैं और बाइबल म्हजी चर्च, my church. और मेरी कलीसिया. म्हज्या सायडीक म्हजी एक सिस्टर बसता. A sister sits beside me. मेरे बगल में एक बहन बैठती है. म्हज्या सायडीक एक ब्रदर बसता. Oh, brother sits beside me. मेरे बगल में एक भाई बैठता है. जिवीत सारकें ना. Life is not correct. जीवन सही नहीं है. शी, हांव ताजे लागीं उलोवचो ना. I won't speak to them. मैं उससे बात नहीं करूंगा. ती सिस्टर सारकी ना. That sister is not correct. वो बहन सही नहीं है. हांव उलोवचो ना. I won't speak to her. मैं उससे बात नहीं करूंगा. वसलो मनीस इफेनान पावतलो. Such person will end up in hell. और ऐसे इंसान नरक में पहुंचेंगे. तुका कित्याक दाखयला देवान दोगांयची खबर? Why did God show you the thing of this brother and sister? परमेश्वर ने आपको क्यों दिखाया है इन दोनों के बारे में? सिस्टर मागण्या केली म्हणटकूच मोबायल बंद कर. सिस्टर तुजे भुरगें आहा न्हू, सिस्टर तुजें हें आहा न्हू, पळय न्हू तो अशें न्हू, आमी देवाचें उतर आयकया सिस्टर, उतर आयकलें न्हू सिस्टर, हें जाता तें जाता, देवाचें आजीरपण येता, पळयतात मागीर शक्ती दिसती पडटा, बदलनी येता. जाणें मरे ब्रदर, पळय तुजे बायल मातशें थिंगा खबरो मारता. मोगान सोद मरे, चोय तुवें मोबायल बंद करूंक ना, चोय तुजे भुरगे मस्ती करता, हिंगा थिंगा भावता. चोय आतां तूं मरे ब्रदर तें उलोय नाका मागणी आसतना, तूं मरे ब्रदर हिंगा थिंगा पळयता. राग येवं He, करेक्ट कर तुज्या भावाक आनी भयणीक.
He may get angry, but correct your brother and sister. भले ही उनको गुस्सा है मगर उनकी गलतियों को आप दिखाओ। खबरों करूं He may gossip about you, भले ही आपकी चुगली करे तुझी ड्यूटी तू कर but you do your duty. मगर आप अपना काम करो। जसे तुम्ही करो रस्तो दला स्वर्ग रस पाछो Just as you have hold on to the way, the true way to heaven, और जैसे आपने सत्य को मार्ग को पकड़ा है, तुझे काम तुझे बाबा आणि तुझे बहिणीकुई त्या रस्त्याने वरपाचे now it is your work to take your brothers and sisters on the same way. और आपका काम है आपके भाई और बहन को भी उस मार्ग पे चलाना। चुकी काढून सकला गुडोय नका जेना तू मेळो असताना When you yourself is unclean, do not remove mistake of others and do not throw them down. जब आप अशुद्ध रहते दूसरों का गलती निकाल के उनको नीचे मत गिराओ। तू सारखो राहो First, you be proper, आप सही रहो पहले, तुझे बाबाकुई सारखो करून जाता तुझ्यारी and then you can change your brother, तब अपने भाई को भी आप सही कर सकते तुझे हैं, बहिणीक तुझे सारखे करून and जाता then you can change your sister, तब आप अपने बहन को भी सही कर सकते हैं आणि तुका देवाचे बेसा मेवतेले and then more and more you receive God's blessing. और परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। ఏం దిష్టి పొట్ట Can we see this? क्या ये दिखता है? ना No. नहीं। सगळे बावडती आपले पोझिशनाक झगडटा All believers, they are fighting for their position. हर वक्त हर समय अपने स्थान के लिए लड़ते हैं। हांव काय बरो सिंगिंग कोत्ता I sing so nicely. मैं कितना अच्छा गीत गाता हूँ। पास्टर सांगता म्हाका बसोंक मेवता I get to sit along with pastor. पास्टर के साथ मुझे बैठने के लिए मिलता है। काय बरो हांव प्रिचिंग कोत्ता हांव ट्रान्सलेट कोत्ता हांव सिंगिंग कोत्ता हांव हे कोत्ता हांव ते तू कोण रे आहा हा 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 You say how good I do this, that, and you point out to others, who are you? और मैं कितना अच्छा गीत गाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तू कौन है? हे गर्व तुका सकल उडयता This pride, it throws you down. एक घमंड आपको नीचे गिराता है। जेन्ना प्रीच कोत्ता आसतना म्हजी खबर जेन्ना प्रीच कोत्ता आसतना Pastor is telling his own thing when pastor proclaims a word. पास्टर अपनी बातें कर रहे हैं कि जब वो प्रचार करते समय आणि मागीर हांव प्रिचिंग कोन्ना कपडे काडून आसतना And when the preaching gets over, that he sits back. और प्रचार होने के बाद में हेच रूप तुमकां दिसती पडचें ना You won't see the same form. और यही रूप आपको नहीं दिखेगा तब। ते लुगारा तुमचेच भाशेन सादो आसतलो At that place, after the preaching, pastor will be just like y'all. और उस समय यानी आप ही के समान यानी एक साधारण रहेंगे। तुमचे भितर येवन म्हाका तुमकां वयर काडूंक जाय Pastor wants to come between y'all and to lift y'all up. और पास्टर को चाहिए कि आपके बीच में आकर आपको ऊंचा उठाने के लिए। हे खरे बावटेचे काम And this is the work of true believers. और ये सच्चे विश्वासी का काम है। पोझिशन घेवन भोंवप न्हय Not to roam with your position. स्थान लेकर नहीं घूमना है, दुसऱ्याक सकल उडोवप न्हय Not to throw others down. दूसरों को नीचे नहीं गिराना है। Luke 6 chapter verse 41 42 वाचून दाखय Luke 6 chapter verse 41 and 42 त्या लुगार कितें सांगता Gospel Luke chapter 6 verse 41 and 42. 41. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? 42. How can you say to your brother, Brother, let me take out the speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. लोक नाती भावाच्या भितर तूं म्हजो भाव हांव तुजो भाव आमी भाव एकामेकाचे तूं म्हजी भयण हांव तुजो भाव तूं म्हजी होय हो ना भावाच्या लुकाचे शुभ वर्तमान आवेस वो सो होल 41 आणि 42. 41. तुझ्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्याच दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. 42. तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय इश्टा म्हज्या राव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडूं दी. अशें तुज्या पेल्यांक म्हणूंक कशें तांकोत तुका. आरे दोंग्या
तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटले. जेजू क्रिस्त साकारका कोंकणीन तितलें ट्रान्सलेटीन बरें ना इंग्लिशीन बरें आं ब्रदर. ओके अरे धोंग घ्या. Oh, you so called. ओ ढोंगी, जेजू येतलो दुसरे पावटी म्हाका व्हरो म्हाका व्हरो म्हाका व्हरो. हे, बस मारता सगळं. हे, हाका हात दिवप ताका हाट करप, हाका हात दिवप ताका हाट करप, ताजेर फोंट मारप आनी ताका येंग मारप. भावार्थ्याची खबर. दोंगी So called believers that you wish this person and you leave that other person. ढोंगी यानी एक को या हाथ मिलाते हैं दूसरे को छोड़ते हैं. तुझे जीवित बदल. Change your life. आपका जीवन बदलो. जेजू येवचो जालो दुसरे पावट. The second coming of Jesus is near. यीशु आने वाला है. आम्ही दूसरी बार. तयार आहात. Are we ready? क्या हम तैयार हैं? आयकोंक बरें दिसता. To listen, it is so good. सुनने के लिए अच्छा लगता है. दुसरे पावट आमचो जेजू येवचो वेळ पावलो बरें दिसता. The time has come for the second coming of Jesus Christ. To listen to this, this is so nice. समय करीब आ चुका है. हमारा यीशु दूसरी बार आने वाला है. सुनने के लिए अच्छा लगता है. अशी आम्ही तपासणी केल्या. But have I tested my own self? क्या मैंने मेरी परीक्षा की है? ताका मानवता तो हांव जाला. Am I pleasing unto Him? उसको भाता हुआ जैसे मैं बना हूँ. फकत उतर आयकता एन्जॉय जाता. The only thing you listen to the word and you enjoy on it. मैं वचन सुनता हूँ और खुश होता हूँ. जेजू क्रिस्त साकारका. नाजा जेजू क्रिस्त साकारका. वसो दीस येतलो. A day will come. ऐसे दिन आएगा. आम्ही खंयचे वाटेन पडो ते सांगोंक जायना. We do not know on which way we may fall. हम किस और गिरेंगे हमें पता नहीं चलेगा. जेजू येतलो तो खरें. Yeah, Jesus will come. This is the truth. यीशु आएगा, शक कोई शक नहीं है. आमकां कितें फायदो जातलो. But what will we receive from it? मगर हमें क्या लाभ होगा? आम्ही शीप मेंढरे जावन भितर पावतले ओ गोट बोकडे जावन आम्ही फेनान पडटले. Will we be like sheep and enter the heaven, or like the goats end up in hell? क्या हम मेमना बन के स्वर्ग में जाएंगे या बकरा बन के नरक में जाएंगे? आमची तयारी आम्ही केल्या. क्या हमने हमारी तैयारी की है? Have we prepared our own self? उत्तर आयकर खुशाल जायनाका. Do not be happy after listening to the word, वचन सुनकर खुश मत हो, वतम्यान खुशाल जावा. but be happy in the spirit. आत्मा में खुश बनो. वो या तयार आहा. Yes, I am ready. हाँ मैं तैयार हूँ. भिरांत ना. You have no fear. डर नहीं है. खुशालकायची खबर जेजू येवचो आती. And this is a thing of happiness that Jesus is coming. खुशी की बात है यीशु आने वाला है. 25 Matthew 25 chapter verse 31 32. पाच वाचून दाखय. जायती हा. Matthew chapter 25, verse 31 and 32. 31. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. 32. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people from one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. सेपरेशन. Speaks about separation. अलग करेगा. पहिले दाखयला येता. First it shows he's coming. पहला दिखाया वो आएगा. गॅदर सगळ्यांक एकठांय गुत्ता. Then he gathers all. सबको इकट्ठा करेगा. मागीर तोरसाद सेपरेशन. Then separation. बाद में तलवार यानी दरार. ताजे येण्याक येवचे एका हांव तयार आहा. So am I ready for his coming? क्या उसके आने के लिए मैं तैयार हूँ? जाल्यार तूं शिपाचे लुगार आसतलोय स्वर्गार पावतलोय. Then you will be in the place of ship. You will reach to heaven. तो फिर आप मेमने की जगह रहोगे, आप स्वर्ग में रहोगे. कोंकणी वाच. माथेवाचे शुभ वर्तमान अवेस्वर 25 वोल 31 आणि 32. 31. जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिंगवसनार बसतलो. 32. आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोवूय सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो.
सगळी राष्ट्रां all nations, पूरे राष्ट्र को कोणा मुखार उबे रावंक पडटलें before whom they will have to stand. किसके सामने वे खड़े रहना पड़ेगा नाजरचे क्रिस्ता मुखार Before Lord Jesus Christ of Nazareth. नासरी यीशु क्रिस्त के वळ सामने जावचो कोणा सोरवणार And He is the real Savior. ये है सच्चा मुक्तिदाता ताजे शिवारान दुसरो सोरवणार ना मनशाक Apart from Him, there is no Savior. उसके सिवा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है येवचो वेळ जालो The time has come for His coming. आने का समय हो चुका है आमी तयार आहा Are we ready? क्या हम तैयार हैं राजाचो राजा येवचो वेळ लागलो The time has come for the King of Kings to come. राजाओं का राजा आने का समय हो गया है आमी तयार आहात Are we prepared? क्या हम तैयार हैं तपासणी करूंक जाय आमची Each one of us must test. हमारी परीक्षा करनी चाहिए जरूर येतलो Yes, truly He will come. वो जरूर आएगा दुसरे पावट जातले ताचे येवप That is the second coming of Jesus. वो उसका आना दूसरी बार होगा पूण संवसारान येवचो ना But He won't come in this world. मगर वो संसार में नहीं आएगा कुपाचेर येतलो He will come on clouds. वो आएगा बादलों में कुपाचेर येतलो He will come on clouds. बादलों में आएगा ताकाच लागून And that is why इसीलिए बावडजंदो believers, विश्वासियों आमी चतुरायन जिवीत जिवंक जाय we have to take heed and live according to it. हम सच्चे से जीवन को जीना है मैथ्यू 24 चैप्टर मत्ती 24 अध्याय वर्ड 27 to 31 27 से 31 वचन बात Matthew 24, chapter 24, verse 27 to 31. 27. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. 28. Wherever there is a carcass, there the vultures will gather. 29. Immediately after the distress of those days, the sun will darken, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. 30. At that time, the sign of the Son of Man will appear in the sky. Amen. And all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. 31. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. divine line Do you understand verse 31? क्या समझ में आए 31 वचन elect विचून काढलोले आमी We are elected people. चुने हुए लोग आमचे पासो जेजू येता Jesus is coming for us. यीशु हमारे लिए आता है आमचे पासो तो येता He is coming for us. वो हमारे लिए आता है आई संसार And the world. आज संसार आपलो देश सांभाळूंक जाय ते कोत्ता They do a lot of things to hold on to their nation. अपने देश को संभालने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं काय उच्चे ना Nothing will remain. कुछ नहीं बचेगा उत्तेले आमी एलेक्ट We are the one, the elected one will remain. बचेंगे तो हम चुने हुए म्हज्या ऑड्ड्यार हात मारून सांगता आमी उत्तेले जे क्रिस्ता सभे Pastor can proudly say that we will stay, we will remain. पास छाती पे हाथ मार के बोल रहे हैं कि हम बचेंगे चुने हुए तो स्क्रिप्चर वाचात Just read that scripture. वो वचन को पढ़ो कितें कितें जातलें सांगलां मागीर जेजू येतलो आपल्या दुतांक धाडटलो कोणा पासत एलेक्ट ए म्हज्या पासत आमी ऑड्ड्या वयर काडून सांगता म्हज्या पासत येस वी आर प्राउड Over there it says ही that खुशालकायेची खबर it is a thing of happiness. ये खुशी की बात है पूण तपासणी करूंक जाय आमची But first we have to test ourselves. मगर परीक्षा करनी चाहिए हमारी दुसरे पाट येवचो कुपाचेर आमी तयार जाल्या The second coming of Jesus Christ is near. Are we ready? यीशु मसीह दूसरी बार आने का समय हो गया क्या हम तैयार हैं तयार आहात Are we ready? तैयार हैं मुखार माथेवाचे शुभ वर्तमान 22-24 बोल 27 ते 31 27 कित्याक जशें जोगलाने उदेंतीक मारता आनी ओस्तोमतेक पर्यान जोगजोगता तशेंच मनशाच्या पुताचें येणे जातोलें 28
मोडे आसा थंय गिदूय एकटवतले 29 त्या दिसाचो संताप येना फुडें सुर्याचेर कालो पडटलो Keep this in your mind. इसे घट मन में रखो। जेजू ख्रिस्ताचे उतर जेजू उलयल्ली उतरांई The words what Jesus spoke. यीशु मसीह ने जो वचन कहा वो है ये। नाही चोंद्री आपलो उजवाड दिवचो ना नोखेत्रां मोलबा वेली सोकला पडटली आनी अंत्रोला वेल्यो शक्ती कोलकोलतल्यो 30 आनी तेदना मनशाच्या पुताची खुणां मोलबार दिश्टी पडटली The power of Lord Jesus Christ will be seen on clouds. यीशु मसीह की सामर्थ दिखेगी बादलों में। म्हाका दुबाव आहा तुमचो Pastor has doubt on you all. पास्टर को शक है आपके ऊपर। तुमच्या लोकांना हांव देवळ्यान बोवाळ मात चाललो कितें सांगलां जेजूची खुणां दिसती पडली आमी कुशाल जावंक नाका आ क्रिकेट कोणाक लायक आहा तेंची खबर सांग कितें म्हाका लायक आहा देखून क्रिकेट कोण आमच्या बरे प्रेल बरो 6 मारलो आमी सामकें कितें जाता हेजी आमकां क्रोड मेळलेले भाशेन कळ्यो ना पयशे मेळले भाशेन एन्जॉय जाता राजाचो राजो सुरवंडार आमचो कुपांचे दिसती पडटलो आमी खुशाल जावंक जाय क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया कोण खुशाल जातले आमी जायना जाल्यार देंवचार जातलो देंवचाराची प्रॉब्लेम देंवचाराक प्रॉब्लेम It is a problem for devil. शैतान को समस्या है। आनी एक तुमी नोट करूंक ना तुमी वाचता पारून वाचता त्या लोकांक कितें जालां नोखेत्रां पडटलीं Over there it says the stars shall fall. और वहाँ पर यानी सितारे नीचे गिरेंगे लिखा है। धाकटी नोखेत्रां न्हू तीं The stars, they are not small, वो जो सितारे हैं छोटे नहीं हैं, व्हडलीं but they are huge. बहुत बड़े हैं। पडटलीं सांगलां It says they shall fall. और कहा है कि वो गिरेंगे। मागीर येतलो जेजू कुपांचेर And then Jesus shall come upon clouds. बाद में आएंगे यीशु बाद में। अरे इश्टार पळय आमी क्लासून कोबार जातेले मरे You may say if the stars fall upon us and we shall be burnt and destroyed. और अरे मुकुट घातला न्हू रे The crown has, जिविताचो मुकुट आहा न्हू you have the crown of life. क्योंकि आपको यीशु का मुकुट है ना, हे स्वत मानात Just believe on this. इसे विश्वास करो। हांव दिता जिविताचो मुकुट Jesus says, I am giving you the crown of life. मैं जीवन का मुकुट देता हूँ आनी दिला न्हू And he has given. और उसने दिया भी है। सांभाळून दवर सांगला न्हू It says, keep properly that crown. और कहा है कि संभाल के रखो। वाचून दाखवला सुरवातीक रेवलेशन 3 चॅप्टर वर्स 11 सांभाळून दवर In Revelation chapter 3 verse 11 it says, keep properly your crown. और हमने पढ़ा है प्रकटीकरण 3:11 वचन में कि संभाल के रखो। रेवलेशन 2:10 वाची जाल्यार निमणे पासून तूं गोट रावतलो हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो सांभाळून दवर मेवल्लो आहा In Revelation chapter 2 verse 10 says, even indeed that you will be strong, then I will give you that crown of life. Already the crown has been given to you, so just hold on to it. प्रकटीकरण 2:10 वचन कहता है कि अंत तक यानी आप विश्वास रखो तो आपको जीवन का मुकुट दूंगा और इस मुकुट को संभाल के रखो। हालेलुया जेजू ख्रिस्त सकारगा पळयात See, देखो नोखेत्रां पडटलीं the stars shall fall. सितारे गिरेंगे, आमकां कांय जावचें ना Nothing will happen to us. हमें कुछ नहीं होगा। हाजेर स्वत मानात Just believe on this. इस पे विश्वास करो। कोणाक जातलें For whom will be troubled with this? तो फिर किसको होगा? जेजू क्रिस्ताचे भायर जे येता पळय तांकां The one who live out of Jesus Christ, for those people. जो यीशु मसीह के बाहर जीते हैं उन लोगों को। जेजू कितें सांगलां What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा है? विचून काडलेले मनशां पासत हांव दुतांक धाडटलो तांकां वयर हाडूंक Jesus says that I will send my angels to the elected people to bring them up near me. और यीशु ने कहा है कि मैं मेरे दूतों को भेजूंगा चुने हुए लोगों को ऊपर लाने के लिए। हालेलुया कोण प्लेनाचे ट्रॅव्हल जाले ते ओ बासीन बॉम्बे गोवा गेले ते ओ ट्रिपीन गेले ऐकात Listen, सुनो, तुमचे सीट तुम्ही घेतले रिजर्व केले पयशे दिवन तुमचे सीट तिकीट काढले सीट if you have reserved your seat by rooming a ticket, और पैसा देकर आपने अपनी सीट को बुक किया है, प्लेनाचे जाता ते सीटाचेर कोणाक येयला ना बसोंक तुकाच it may be on plane or on the bus, no one else has the responsibility over this to sit on it, only you. प्लेन में हो या बस में, वो किसी को अधिकार नहीं, सिर्फ आप ही को बैठ सकते हैं। दुतांक धाडटलो He will send his angels. वो दूत को भेजेगा। इस्टार पडो ना आनी कितें पडो Whatever may fall, the stars or anything else. सितारे गिरे हैं और कुछ भी गिरे, तसोच आसतले आमी We will be in the same manner.
हम वैसे ही रहेंगे ही संसा कुशल कायची खबर दुसऱ्या बावडी येवची जेजू क्रिस्ताची आमचे सोबे And this is a thing of happiness to us for the second coming of Jesus Christ. ये है खुशी की बात हमारे यानी यीशु की दूसरे आने की का बर झाले भाई का बर वाच. संवसारांतली कुलां होड्डी बोडयतली आणि नका हे करे सोद ऑन बोर्ड जेंदो संसाची मनशा जेजू ना म्हणते ओय म्हाका मान उडोय मोजी सुसूंक जायना उचो पेटला नकेत्र पडला हे आहा हा हा ओड्डी बडयतली कोणे सांगला खंयचे प्रवाद्यान सांगला ना तर जेजू क्रिस्तान सांगला No prophet spoke this, but Lord Jesus Christ said, the unbelievers, they will cry, they will tell Jesus, Jesus, kill me. आम्ही बडोवचे ना ओड्डे आवय कितें जाता रे नकेत्र पडा हे कोण थोडे भावार्थी बी येता Some थोडे people- भावार्थी पडा आवय वेळ लागी पावलो हें गोट्टा तें गोट्टा लायन ऑफ जुडे आसवता हा जेजू क्रिस्ता कारगा हालेलुया पासवणी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या जिवितान It is a promise of Jesus Christ in our life. वादा यीशु मसीह का हमारे जीवन में वड्डे धाडोवचे तांचे काम कुशाल जावचे आमचे काम It is their work to do all those things, and it is our work to be happy. छाती पीटने का उनका काम खुशी करने का हमारा काम जेजून सांगला Jesus has said, यीशु ने कहा हांव सांगो ना Pastor is not telling you. पास्टर नहीं कह रहे घरा वचून वाचात Go home and read that scripture घर में जाकर पढ़ो आनी देवाक आर्गां दिवंक लागात and start giving thanks to God. और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगो हालेलुया विचून काढलेले आम्ही We are chosen one. हम चुने हुए हैं ओ लॉर्ड जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस वाच बाय आणि पोदवेन आणि व्हडे मोहिमेन मोलबाच्या कुपांचेर येतलो मनशाच्या पुताक देखतली आमेन With power. सामर्थ हालेलुया संसार पळयतलो तुझ्या म्हज्या आमच्या सरुंडाराक जेजू क्रिस्ताक The world will have a look to our and our Savior, Lord Jesus Christ. संसार देखेगा आपके मेरे हमारे उद्धारकर्ता को पूण कांयच बरें मेवचें ना जेजू पयल्यार पासून त्या टायमार Even if they look at Jesus, they won't get anything good. अगर उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो भी उस समय कुछ नहीं मिलेगा उनको आनी जेजूच्यांनी कांय करूंक जायना त्या टायमार उडगासरात And even Jesus can't do anything at that time. और उस समय यीशु भी कुछ नहीं कर पाएंगे कांय करूंक जावचें ना जेजू लागीं Jesus won't be able to do anything. और यीशु भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस त्या समय टायमार कितलेय तुमी रोडात As much as you want, you cry. उस समय कितना भी आप रहो कितले तुमचे रोगोत पासून हांव As much you may shed your blood, all those things. आपका लहू कितना भी बहे उस जेजू समय लागीं कांय जावचें ना त्या टायमार But at that time, Jesus won't be able to do anything. और उस समय यीशु से कुछ नहीं होगा तो सरुंडार म्हण येवचो ना येता आसतना When he will come, he won't come as a savior. वो जब आएगा उद्धार करता बोल के नहीं आएगा सरुंडार जर येवन गेला तो Already he had come and he went being a savior. वो उद्धार करता बन के तो आके चले येतलो गए राजाचो राजा जावन Yes, he will come the second time being the Lord of Lords. हाँ वो आएगा दूसरी बार राजाओं का राजा बन के मोतीन घालात Just put this in your mind. इसे मन में डाल लो राजा रोगताक चुचुरेना राजाचे काम रोगोत आरोपाचे कातोरपाचे The king, they are not afraid of that blood, but they shed blood. राजा लहू पे दया नहीं दिखाता है वो लहू बहाते हैं हालेलुया त्या टायम कितले लोकांचे रोगो दिसती वळवळ दिसती काय ना त्या लुगार रावतलो मेळे इतूर पांय घालचो ना आपल्या दुतांक धाडटलो म्हजे भुरगीं हात काय जावचें ना आमकां वतलो हालेलुया जेजू क्रिस्ता कारगा ही कुशलकायची खबर And this is a thing of happiness. और ये खुशी की बात है खबर जाले वाच 31 आणि मोठ्या आवाजाचो कोर्नो दिवन तो आपल्या दुतांक धाडटलो आणि संवसाराच्या चारूय दिशां वेल्या अंत्रोलाच्या एके शिमेतावन दुसरे शिमे पर्यान आसलोल्या ताच्या विंचलोल्यांक ते जमयतले आख्खे संवसाराक खंयचोरी जावं आमचे भाव भयणी हा कोरे बुचपी ते आमी एकाच सेकंडान एकाच सब ठप सब बाय बाय go to hell we are going to heaven hallelujah जेजू क्रिस्ता कारगा पूण चोचराय दोरात It says it may be in any corner of the world, we will be taken at once, but it says take heed. और आप किसी कोने में यानी क्यों न रहे भाई बहन उन सबको एक ही यानी बार में ले जाएगा और सचेत रहो चोचराय दोरात बावट्यांदो
Pastor says, take heed. विश्वासियों लूक सचेत रहो। 21 चॅप्टर वर्स ये किती सांगता लूक 21 चॅप्टर वर्स ये किती सांगता लूक 21:8 वचन। Gospel Luke chapter 21 verse 8. He replied, watch out that you are not deceived, for many will come in my name, claiming, I am he, and the time is near. Do not follow them. ना हो पास्टर सदाच दुसरे पास्टरचे आड उलयता No, this pastor always speaks against some other pastors. ये पास्टर हमेशा दूसरे पास्टरों के विरोध में बोलता है। अरे हांव खंय आड उलयता Where is pastor speaking against you all? कहाँ हमारे पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में बोलते हैं? देवाचे उतर तुमकां सुटावे करून सांगता Pastor is revealing the word of God and explaining it to you. हमारे पास्टर परमेश्वर के वचन को खुलासा करके आपको बताए हैं। त्रासान पड नाका डिसीव जाय नाका सांगला जेजून Jesus has said, do not be deceived. और यीशु ने कहा है कि भ्रम में मत गिरो, तांचे फाटल्यान वच नाका It says, do not go with them. उनके पीछे मत जाओ। कोण ते Who are those? कौन है वे? जेजूच्याच नावान उभे रावल्यात Yes, they stood up in the name of Jesus, वे यीशु के ही नाम से खड़े हुए पण हैं, बायबलाच्या उत्तरा प्रमाणे ते करिना but they are not doing all those things according to the word of the Bible. मगर वे बाइबल के वचन के अनुसार नहीं करते हैं। ये मनीस तुका डिसीव कोतेले नाट्यले And such people will deceive you. और ये इंसान आपको भरमाएंगे। चोत्राय दूर Take heed. सचेत रहो। जेजू सांगता Jesus says, यीशु कहता है तू सकल पडना जावच्या for you not to fall down. आप नीचे न गिरने के ताकाच लागून And that is why लिए, इसीलिए तुम्ही you आप पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आणि भावार्थ वाढवूंक जाय you have to read the Holy Bible and you have to increase your faith. बाइबल को पढ़ना है और विश्वास को बढ़ाना है। त्यांना गमन येतले तुमकां And then you will come to know तब आपको पता चलेगा खंयचे देवाचे आणि खंयचे देवाचे न्हय पळयते that what is of God and what is not of God. कौन सा परमेश्वर का है और कौन सा परमेश्वर का नहीं है। एकदम गरजेचे तुम्ही मनान घालून And this is very important for you to put this in your mind. और ये बहुत जरूरी है इसे मन में डालना आप। वाच बाय लुकाचे शुभ वर्तमान 21:21 वोल 8 ताणे म्हळें तुमकां कोणे फोटोय ना जावंक चोत्रायन रावात तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काल लागीं पावलो अशें म्हणटले तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात। जायते जाण भावार्थी म्हजे लागीं विचारता A lot of believers they question our pastor. बहुत सारे विश्वासी हमारे पास से सवाल करते हैं, आमच्याच फेलोशिपांतले That is of our own church. हमारे ही कलीसिया के जावं गोंयचे भायर चलता फेलोशिप जावं गोंयांत चलता पास्टर आमी दुसऱ्या लुगार कित्याक वचोंक नाका It may be from Goa or from out of Goa. They say, Pastor, why should we not go some other place? गोवा के बाहर भी चलती है यहाँ के, यानी वो पूछते हैं पास हम दूसरे कलीसिया में क्यों नहीं जा सकते हैं। शिकवण गरजेची Teaching is very important. शिक्षा बहुत जरूरी है। विचार कोत्ता ते They question. वे सवाल तो करते हैं, ते विचार कोच्चे पयले तांकां आमी शिकयलां तें तांच्या मतीन वचोंक ना Before they will question, Pastor has taught them, but they do not put this in their mind. वो सवाल करने से पहले पास उनको शिक्षा दी हुई रही थी मगर वो उनके मन में नहीं जाती गई है। बारीक चोत्राय दुरात Just take heed. और सचेत रहो। तुम्ही विचार कोच्चे पयलीं तुमकां शिकवण येता Before you questioning, Pastor, the teaching has come to you. आप सवाल करने से पहले आपको शिक्षा आई हुई रहती है। ओके विचार कोत्ता त्या मनशा वयर हांव उलयतां Pastor speaking about the people who questions. पास जो बोलेंगे, जो सवाल करते हैं उनके ऊपर कित्याक वचोंक जायना Why can't you go? क्यों नहीं जाना चाहिए। कित्याक त्या लुगारा ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड ना मेवलेली पावटी Verse saying, because in that place, the time when they meet, there is no breaking of bread. क्योंकि पहला जब वे इकट्ठा होते हैं रोटी का तोड़ना नहीं है। त्या लुगारार वतम्यान बसोना त्या लुगारा लाकडाचो फ्रीज हो हे फ्रीज इमेज मूर्ती Over there, they do not worship in spirit. There is some kind of idol, wood, all those things. और वहाँ आत्मा से आराधना नहीं होती, वहाँ पर मूर्ति क्रूस या मूर्तियाँ रहती हैं। हालेलुया डॉक्ट्रिन सारखी आसोना The doctrine that is not correct. उनकी शिक्षा यानी डॉक्ट्रिन सही नहीं आणि रहती। व्हडल्यातले व्हडले जावन आसा And the biggest thing is that और सबसे बड़ी है तुका देवान खंय गायला त्याच लुगाराचेर रावंक जाय
You have to stay in the place where God has put you. आपको जिस जगह पर परमेश्वर ने डाला है उसी जगह पर आपको रहना है हे एकदम गरजेचें. And this is very important. और ये बहुत जरूरी हे है. सगळें जाणा जातलो जाल्यार For you to know all these things, ये सब आप जान पाओगे. शिकवण येता तेन्ना न्हिदोंक जायना. शिकवण येता आसतना कान उदके करून आयकोंक जाय. when the teaching comes, you should not sleep, but you have to open your ears and listen to it. जब शिक्षा आती है तो सोना नहीं है, उसे कान खोलकर ध्यान से सुनना है. हालेलुया. जेजू क्रिस्त करगा. एक गोंया एक फेलोशिप चलता, रेतीर चलता, मिनिस्ट्री चलता. A ministry is conducted in Goa. गोवा में एक मिनिस्ट्री चलती है हांवें टीव्हीर पळयलां. Pastor saw it on the TV. और हमारे पास ने टीवी पे देखा है. जायते सैतान आबूज जाता पूण सुटका मेळना. The devil, they are troubled, but still they do not receive their freedom. बहुत सारे शैतान व्याकुल होते हैं मगर उनको छुटकारा नहीं मिलता है. त्या लुगारात त्या मनशान एका इंडियेच्या मनशाक प्रिचराक हाडलो. At that place, that person brought a preacher from India. वो मिनिस्टर का पास्टर ने क्या किया मालूम है? दूसरा पास्टर को लेके आया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वो क्या बोलने लगा? वो पास्टर, दूसरा पास्टर, वो कलिसिया के बारे में क्या बोलने लगा? तुम्हारा कलिसिया में आगे जाएगा. तुम्हारा कलिसिया में परमेश्वर ने चुना. तो उलोंग लागला. कितें उलोंग लागला? तुझी चेंज मिनिस्ट्री मुखार वयतली. तुझी मिनिस्ट्री देवान वेंचून काडल्या. Now, what did he say? That your church is, or your ministry is selected by God and it will move forward. पूण ते चर्ची But that church, और उस कलीसिया में काजा जाना आसतना एका वस्तूरे लागीं ताणें पातो खाताले आनी भुरगो आहा एक. he committed sin. He did not marry, but he has a son. उसने पाप किए. एक लड़की से यानी संबंध जोड़कर उसको एक मूर्ति लड़का पूजा है चलता. There is idol worship. और वहाँ पर मूर्ति पूजा भी है तो ट्रुथ त्या लुगारांना There is no truth. और वहाँ पर सत्य नहीं आंगणे है. करूंक पळय तो पयशे घेता. When anyone calls him for prayers, he takes money. और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए डिमांड पैसा लेता म्हाका है. 5,000 जाय म्हाका 10,000 डिमांड. He demands, I want 5,000 or 10,000. वो डिमांड करता है 5,000 10,000. पूण जेतून सांगला तुका फुकट मेळ्ळा ते फुकट दी. But Jesus has said, the freely which you have received, freely you give. और यीशु ने कहा है आपको मुफ्त मिला है मुफ्त दो. आतां हे मिनिस्ट्रीचेर And over this ministry, और इस मिनिस्ट्री के वो कोण ऊपर येयलो तो एनॉयडिंग वो येयलो तो प्रोफेसाय करता. the one who was anointed, one who was brought, he is now prophesying. और ये जो आया वो अभिषेकित वो उस पे भविष्यवाणी कर रहा है. आतां तुमी सांगात. Now pastor is asking you, अब हमारे पास आपसे पूछ रहे हैं, बोलो. काय बरे ठाक पडटा मरे. ओय हांवूय पड उडयता दोरी घालून तुका. you see how good is this, they fall, all those things. आप कहते हैं कितना अच्छा वो गिर रहा है. प्रोफेसर आहे तुमका. तुम्ही म्हाका जायत्या जाणांक तुमची हिस्ट्री सांगलेली आहा. थोड्या दिसांनी तुमकां 2 म्हयन्यांत उलयता. आवय पास्टरान प्रोफेसी केली म्हज्या घरांनी सांगलें. अरे एका दिसा तुवें म्हाका सांगलोली ती खबर. एका दिसा तुवें म्हाका सांगलोली. तुज्या फॅमिलींत म्हाका ती गमल्या. प्रोफेसी पर अरे प्रोफेसी फळ्यान जाणा उतरा फळ्यान धांवात रे. Do not run after that prophecy, but run after the word. भविष्यवाणी के पीछे मत दौड़ो, वचन के पीछे दौड़ो. जेजू येऊच हो जाला. The time has come for the second coming of Jesus. यीशु का आने का समय आ चुका है. डिसीव जाय नाका. Do not be deceived. मत भरमाओ. खरेंच सांगता म्हज्या हड्ड्याचेर आत मारून सांगता लायन ऑफ जुडाचे लोक बेसावचो लोक. Pastor can boastfully say that the Lion of Judah church members, they are blessed. पास्टर अपनी छाती पे हाथ मार के कह रहे हैं कि द लायन ऑफ जुडा कलीसिया के सदस्य धन्य है. काल ओपर आव्हान म्हजी बायल उलयताले खरेंच कितलोय पावस येयलो कितलें हें जालें चर्चीचे मेंबर येयनासो रावना येयत रावता. हें बेसांव आमकां. तुमी खरी बेसांवची. Pastor says you all are truly blessed. और पास्टर कह रहे हैं आप सच में आशीषित है. जेजू क्रिस्त साकारगा. हालेलुया. बेसांवची म्हणून लायट राव नाका. गोट रावात उतरान. जेजू क्रिस्त साकारगा. लूक 21 chapter verse 34 to 36 वाचून दाखय म्हाका. लूक 21 chapter verse 34 to 36. Gospel Luke 21, verse 34 to 36. 34. Be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. 35. For it will come upon all those who live on the face of the whole earth. 36. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.
तुमकां भावटे आंकडो दिल्लो नंबर 75% आमकां वय ना 75% भावट्यांक आनी 25% आमी वीक आहा हें उत्तर आमकां जबाब दिता This word is giving us an answer that 75% we are strong. कोंकणी वाचून दाखय लुकाचेर शुभ वर्तमान 22:21 वोल भावार्थी चोचराय दोरात भावार्थ्यांचो चोचराय दोरात म्हाका भावार्थ्यांचो चड मोग आहा Pastor says he has love for the believers, so take heed and listen to this. लुकाचेर शुभ वर्तमान 22:21 वोल 34 to 36 34 तुम्ही तुमची चोत्राय दोरात सिटीत दवर It says, pay attention. ध्यान दो तुका जाय ते जिवीची हे नाका Do not live the life which you want. आपको जैसा चाहिए वैसे जीवन में जियो उत्तर मोडून जिवीची हे नाका Do not disobey the word and do not live according to it. वचन को तोड़कर जीवन मत जियो हांव विश्वासी म्हण अशें नाचोन नाचोन असोच उत्तलोय स्वर्गार पावचो नाय If you say that I am a believer, you won't go to heaven, you will remain in the same way. आप- मैं विश्वासी बोल के ऐसे ही मत रहो ऐसे ही रहोगे आप स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे हे जेजू ख्रिस्ताचें उत्तर This is the word of Jesus. ये यीशु मसीह के वचन है सोणसाच्या मनशाक सांगून ते आमकां सांगला He did not tell for the people of the world, but he told us. यीशु ने संसार के लोगों को नहीं कहा हमें कहा है वाच गो बाई नातोर कामचाराक लॉबदॉन हा कामचाराक म्हाका हे फेलोशिप कामचार कितें लॉबदॉप म्हणल्यार कितें इनवॉल्व जावप तुज्या कामा भितर संडे मागीर पळयात एक संडे चुकलो जाल्यार दुसरो संडे या कामचार कामाक एक जावप कामा फळान तांदूळ ना न्हू अरे तांदूळ नाल्यार मोत्ता तूं देवाचें आजीर पोण देवाचें बेसांव आहा हालेलुया हालेलुया आयका तुमकां म्हज्या हातान घातला कितें जाणो तुमचो पासो जमनींतल्यान वयर काडला देवान जेवण नासलेलो मनीस त्या मनशाक वयर काडला ही म्हाका एक्सपिरियन्स आहा तो पदवेदार म्हणून हांव जाणा जेजू क्रिस्ता कारगा हालेलुया जेजू क्रिस्ता कारगा वाच बाई बेबदिकाय करून आणि ह्या जिविताचे उस्के काढून तुमची काळजां जोड जातीत आणि तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत आमचो जेजू येवचा बरें दिसलें हो अकस्मात येयत मागीर कितें मातशें टायम दिवचो नासलो जेजू मातशें रातो चड जाला निवळोंक मातशें 2 दीस म्हणून वयतले मारला जेजू मातसो टायम दिवचो नासलो हांवें तुजें देवाचें देवाक दिवंक ना तायत ना फरी येत्या वर्साक दिवंक केल्लें दुसऱ्या म्हयन्याक दिवंक केल्लें मातसो आयज येयलो देव काकूड सर देव काकूड सर काकूड जेजू म्हाका बोगोस हांव सोरो पेलो जेजू हांवें पातो केलें जेजू हांवें तायत जेजू म्हाका हांव वडकोच ना तुका I do not know you. मैं आपको जानता ही नहीं टायम ना आतां There is no time now. अब समय नहीं है सिटां भरल्या प्लेनाची The seats are filled. और प्लेन की सीट सब भर गए हैं Each one's name has been written. हर एक इंसान का नाम लिखा है त्या एंजलाच्या हातान दिल्लें आहा म्हजें नांव पास जज कम्स वेरी पास जज टेक एंजल दुसऱ्याक तो एंजल दुसऱ्या हातीक दवरचो ना दुसऱ्या फुडें येवचोच ना देवाचो एंजल येवचोच ना तांकां हें दिलां नांवांचें लिस्ट दिलां The angel has been given a list of names. स्वर्गदूत को नाम के लिस्ट दिए गए ओके दुसरे भाशेन उलयता आतां आमी इतलेच लोकांचे जे आमी कोल्हापूर वयता आसतना अमकें लिस्ट बसयता बाबा टाक 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 सगळे चेचे मेंबर सगळ्यांची चेच म्हणून सगळ्यांक आपयता हांव आनी व्हरोंक जाता जायना न्हू सटन लिस्ट दिला तोच आपल्याक सांगोना नांव सांगलें तो घरा बॅग गुंतलो सकाळी फुडें पावतलो आमगेर दुसरे पावचो ना वय ना ते भाशेनूच जे क्रिस्तान दुता लागीं नांवां दिल्लीं आहा एलेक्ट ना 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 चुकला मदें चुकला ना ना आतां आमी म्हणटा येतलो 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 तूं कित्याक पियेतलो पियेतलो पिवपाचें बंद कर येतलो भिरांतीन राव You say he will come and you dance and you drink. Stop drinking, he will come and take it. वो आएगा बोल के आप नाचते हैं और पीने का बंद करो और वो आएगा ये सत्य है क्या बोल रहा है थोड़ा दारू पिएगा तो क्या होता है You say, what are you saying? What happens if I drink a little? कोई नहीं दिखता थोड़ा ये क्या बोलता है स्मोक सिगरेट सिगरेट मारेगा तो क्या बाद में वो चॉकलेट खाएगा
ब्रश बरा दांत वसोत हालेलुया पवित्रकाई सांभाळ Keep your holiness. पवित्रता को संभालो साध्या उतर न्हय पॉवरफुल उतर हे It is not an ordinary word, but a powerful word. ये सादे वचन नहीं है सामर्थ्य हे वचन जीवित दिता ते उतर The word which gives life. ये जीवन देते हैं वचन वाच गो बाय 35 आख्खे पृथ्वीर असलेल्या सगळ्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो 36 येवच्यो आसात त्या गोडण्या मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांते विणे उबी रावंक तुमकां गोठाय मेलचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात मुझे क्यों चाहिए मागणे म्हणल्यार कितें What is the meaning of prayer? प्रार्थना यानी क्या है चोर जेता चोरा मागणे गुत्ता अरे मागणे म्हणच्या कितें आयकलां तें कोणाने पळप ताका म्हणटा मागणे Prayer means whatever you have heard the word of God, being the doer of it. प्रार्थना ये है यानी जो कुछ आपने सुना है उसे कार्य में करो खंयच्याय शैतानाक अधिकार आसना तुज्या जिविताचेर And no devil has a right over your life. कोई शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं हे रहेगा उतराका पदवी रे There is power in this word. इस वचन को है सामर्थ जिवित दिता ती पदवी The power which gives life. जीवन देता है वो सामर्थ शैतान थाराय भियोंक जाय तुका जेन्ना हें उतर तुज्या भितर आहा पळय तेन्ना When this word is in you, the devil has to be afraid of you. शैतान तुरंत डरना है जब ये वचन आपके अंदर है आयकात बावरजेंदू Listen, believers. सुनो विश्वासी जायते रूपान शैतान येतलो A devil will come in many ways. बहुत रूप से शैतान आएगा मजे पण येता दुसऱ्या रूपान तशें आंगार येता पूण ताका दाखोवंक जाय तूं कोण पळय तो बस Yes, even he comes before a pastor in other ways like to scare you, but you have to show him who you are. तूं दाखय तूं कोण तो क्रिस्ता सवे You show him who you are to Christ Jesus. आप दिखाओ आप मसीह के अंदर कौन है वो तुझे मुखार दिमी मारतलो देंवचार He will kneel before you, the devil. आपके सामने वो घुटने टेकेगा शैतान हें खरें सत And this is the truth. और ये सत्य है तुमी सादी मनशां न्हय You're not ordinary, आप साधारण इंसान नहीं देवाचो पूत आनी देवाची तू but you're the son and daughter of God. आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं ओ जेजू क्रिस्त जालें काबार जालें बाय जेजू क्रिस्ता कारगा ओके जायते हांव स्क्रिप्चर दिन काबार करता थोडी गरजेची वाचता ओके स्क्रिप्चर दुसरें बरयात मॅथ्यू 25 चॅप्टर वर्स 1 to 13 त्या लुगारार आंकवाऱ्याचे वस्तोऱ्यांचे वट दाखयलां 10 वस्तोऱ्यो Over there, that verse speaks about 10 virgins. और वहां पर 10 लड़कियों के बारे में कहा है 5 100% जाल्ल्यो वस्तोऱ्यो 5 75% जाल्ल्यो वस्तोऱ्यो Out of the 10, 5 were 100% and the remaining 5 were only 75%. 5 100% हो गए और 5 जो है 75%। म्हणजे 10 वस्तोऱ्यो भावार्थीच The 10 women, they were believers. मगर 10 लड़कियां विश्वासी ही नवऱ्याक मेळोंक गेली कोण नवरा जेजू क्रिस्ताक मेळोंक गेली They went to meet the bridegroom, who? Lord Jesus Christ. वे दूल्हे को मिलने के लिए गए कौन दूल्हा यीशु मसीह तो नवरो तो दोनी तो सगळे ताका जाय तेन्ना येवदी तूं सांग इचा नाका ताका जाय तेन्ना हांव तयार आसूंक जाय He is the Lord, He is the bridegroom, He is everything. You do not have to ask Him when He will come. You must be ready. वो दूल्हा है वो प्रभु है वो सब कुछ है आप मत पूछो वो कब यानी आना है 5 वस्तोरी सरकार 5 वस्तोरे 5 virgins in वाचात heaven. वाचात घरा वचून वाचात Go home and read it. 5 went to heaven and 5 went to hell. 5 स्वर्ग में गई और 5 नरक में गई घर में जाकर पढ़ो आयज तुजे म्हजे लागीं आमच्या लागीं जेजू एक विचार करता Today, now Jesus is asking all of us. आज आपसे मुझसे यीशु एक सवाल करता है वाचून दाखय बाय लूक 18 चॅप्टर वर्स 8 तुजे लागीं म्हजे लागीं जेजू ख्रिस्त विचार करता Jesus is questioning us. यीशु हमसे सवाल कर रहा है Gospel Luke chapter 18 verse 8. I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? विरांतीची खबर Think of fear. ये डर की बात है लुकाचे शुभवर्तमान 18 वोळ 8 होय हांव तुमकां सांगता तो तांकां वेगीच निवारतलो तरी पूण
मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावार्थ मेळटलो काय? काय Shall you find faith? क्या विश्वास मिलेगा? हे बेशे चालते दोरी नाका बावट्यांत उतर Do not think that this is a simple word, believers. विश्वासी इन वचन को साधारण मत पकड़ो. ना म्हाका बावट देखून हांव बावटी जाला न्हू. You say, no, I have a faith. As a result, I became a believer. मुझे विश्वास है बोल के मैं विश्वासी बना हूं ना ना. ना 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 तुका बावट देखून तू बावटी जावंक ना. No, because you have faith, you do not become a believer. नहीं, आपको विश्वास है बोल के विश्वासी नहीं बने हो. तुका म्हाका विचूर काडला देखून जाला बावटी. We have been believer because you and I are chosen. जेजू क्रिस्त Jesus Christ, यीशु मसीह हे संवसारान in this world, इस संसार में कुडीचे रूपान जियेतालो पळय तेन्नाची खबर. the time when Jesus was living in this world in the form of flesh, जब यीशु मसीह शरीर के अनुसार जी रहे थे तब की बात है. मरोक वयचे पयलीं before going to die, मरने से पहले दुसरे गांवांतल्यान जेरुसलेम गांवांत तो येयलो. जेरुसलेम येयलो. from some other place he came to Jerusalem. दूसरे गांव से यरूशलेम में आया. कितें घडलें? And what happened? क्या हुआ? हांव स्क्रिप्टचेर दिता वाचले उगोच जातलो. ओके हांव स्क्रिप्टचेर घरा वचून वाचात आमी चातलो दुसरे पाटी. ओके लूक 19 चॅप्टर लूक 19 अध्याय वर्स 28 to 40. 28 से 40 वचन. 28 to 40. 28 से 40. त्या लुगारार वो शे आमकां मेवता. Over there we get it this way. उस जगह पर हमें ऐसे मिलता है. जेजू जेरुसलेम येता. Jesus comes to Jerusalem. यीशु यरूशलेम में आते हैं. जेरुसलेमचो लोक And the people of Jerusalem, यरूशलेम के लोग जेजू क्रिस्ताचे शीस the disciple of Jesus, यीशु मसीह के शिष्य कितें कोत्ता? what do they do? क्या करते हैं? आपले कपडे काढून They remove their clothes वे अपने वस्त्र को निकालकर एक गाडवाचेर घालता and they put it on the donkey. वे गधे के ऊपर डालते हैं आनी जेजूक बसयता. And they put Jesus Christ on that donkey. और यीशु को बिठाते हैं उस गधे पर. आणि आपले थोडे कपडे काढून And after removing their other clothes, और कुछ कपड़े निकाल कर ऐकात listen, जमनीर घालता बरोयल्ले हा त्या लुगारार. it is written that they lay it on the ground. और वहां पर लिखा है कि जमीन पे डालते हैं. आमचे कपडे काढून येते मेड्या लुगाराचे आमी घालचे ना. वय हो ना. We won't be ready to put our clothes in that dirty place. और हम अपना कपड़ा निकाल के गंदे जगह पे नहीं डालेंगे. पूण ओगो तेले आमचे भाव भयणापासून आमी करूंक जाय. But the time comes that we have to do this for our brothers and sisters. मगर समय आया तो हमारे भाई बहनों के लिए करना चाहिए. थोडी गोष्ट म्हज्यानी तुमचे मुखार सगळे सांगूंक जायना हांव कितें कोत्ता आनी कितें केलां तें सांगूंक जायना. कित्याक हें उडवीक जाता दुसऱ्या मुखार उडवीक जाता. एक मनीस 50 वर्सां क्रॉस जाली. 50 जाली क्रॉस जाली म्हाका. ओके 50 क्रॉस जाली. हो मनीस 50 कील उखलता एकटो तुमचे पासत हेर सांगोना जाल्यार कोच्चे पडटा. We have to do this. करना आमी भाव भयण एकामेका पासत कोच्चे पडटा. We believers, we have to do for one another. हम विश्वासी भाई बहनों के लिए करना ही पड़ता अरे है. बेंड दुखतेले पाय दुखतलो इतली वर्सांनी 50 किलो कोलता हे चिंत नाका. मोग पळे Do not think this will भाव भयण happen. सगळे मोग पळे See the love between brothers and sisters. भाई बहनों के अंदर प्रेम दिखो. कोर Do it. करो. देव बेसांव दितलो. God will bless you. परमेश्वर आशीष देगा. आयज हे लुगार आमकां दिश्टी पडटा. Today over here we can see आज हमें इस जगह पर दिखता है. गाडवाचे डोंकीचेर कपडे घातले. they put their clothes on the donkey वे गधे के ऊपर कपड़े डाले. जेजूक बसयलो. and they let Jesus sit on it. यीशु को बिठाए. जेजू जेरुसलेम भितर सोदता. And now Jesus enters into Jerusalem. अब यीशु यरूशलेम के अंदर जा रहा है. लोकांनी जमनीक कपडे घातले. The people have laid their clothes on the ground. लोगों ने कपड़ा जमीन पे डाला. झाडाचे फांदे कातरून पानां झाडां उडयली. All the leaves, palms, leaf, they laid it on the ground. और पेड़ के डालियों को काट कर जमीन पे राजाचो डाला. राजाचो बोवाळ मारूंक लागले. They started screaming, Lord of Lords and King of Kings. और वे चिल्लाने लगे राजाओं का राजा राजाओं का राजा. बारीक डिटेल मेवता मॅथ्यू 21 चॅप्टर वर्स 7 to 8 9 10 सगळं बारीक डिटेल. मॅथ्यू 21 चॅप्टर वर्स 7 to 8 दोन्ही लूक आणि मॅथ्यू वाचात. आता विचार म्हजो तुमचे लागीं. Now pastor is asking a question to you. अब पास्टर का सवाल आपसे. कुपाचेर येवचो हा जेजू. Yes, Jesus will come upon clouds. यीशु आने वाला है बादलों में. आम्ही कितें घातला कितें तयारी केल्या. So what have you prepared for him? हमने क्या तैयारी की है? जेरुसलेम जेजू वयता आसतना
When Jesus was going to Jerusalem, जब यरूशलेम में यीशु जा रहे थे तब जायती पानां उडयलीं लुकटां उडयलीं सगळ्यांक जेजूक चलोंक a lot of clothes and a lot of leaves were thrown for Jesus to walk on it. बहुत सारे वस्त्र बहुत सारे यानी पान नीचे जमीन पे डाले राजाचा राजा कुपाचेर येवचो आसा But the Lord of Lords, He will come upon clouds. राजाओं के राजा वो बादलों में आने वाले हैं राजाचो राजा कुपाचेर येवचो म्हणल्यार कोण जाणा कोण राजा कोणा व्हरों येतलो अरे तुका आनी म्हाका व्हरोंक येतलो एवेर राव सिंधाक राव हांवें कितें जाणां राजाचो राजा येतलो कुपाचेर The Lord of Lords is to come upon clouds. राजाओं का राजा आने वाला है बादलों में हें उतर म्हणटान शाउट जावंक जाय जेस क्रिस्ता कारगा आमी कितें उडोवंक जाय ताचे मुखार So what should we throw before Him? उसके सामने हमें क्या डालना चाहिए पवित्रकाय His holiness. पवित्रता पवित्रकाय The holiness. पवित्रता ताचेच उतर ताचे मुखार आमी दवरूंक जाय We have to keep His own words before Him. उसी के वचन उसके सामने हमें रखना है एकदम गरजेचें And this is very important. और ये बहुत जरूरी है एकदम गरजेचें This is very important. और ये बहुत जरूरी है हे मनशाक And for such people, और ये इंसान दुसरे फावटी जेजू येवच्या आदी कुशालकायची खबर it is a thing of happiness to such people for the second coming of Jesus. और ऐसे इंसान को जो यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले वो खुशी की बात है उनको 1 कोरिंथियन पहला कोरिन्थियन 1 चॅप्टर पहला अध्याय वर्ड 8 8 वचन त्या लोकांना कितें सांगता वहां पर क्या कहता है देवाचे उतर कितें सांगता ते वाचून दाखय 1 Corinthians chapter 1 verse 8. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on that day of our Lord Jesus Christ. How should we be? कैसे होने आमी चाहिए कशें आसूंक जाय How should we be? हम कैसे होना चाहिए बेश्टेच आपूच नाका जेजू येवचो हा जेजू या कुपाचे येतलो येतलो होय पूण कशें आसूंक जाय Do not just simply be troubled that Jesus will come, but how should we be? ऐसे व्याकुल मत बनो कि यीशु आने वाला है यीशु आने वाला है। हमें कैसे होना चाहिए ऐका Listen, सुनो Pastor will show थोडो you. लोक कसो हा तो दाखयता Pastor will show you some people how they are. पास्टर दिखाएंगे कि कुछ लोग कैसे हैं वो आणि त्या होता समजा माहिती अरे तू देवाचो हे देवाचे देवाचे आता 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया घालता कळतलें न्हू आता पाकळी जाल्या पाकळी गाला लागले हा पावर चिमी ताका बेसोन जायना प्रोटेक्शन येना हिलिंग येना डिलिव्हरन्स येना विक्ट्री येना किसकी पडटलें न्हू पास्टराक सांगलेलें कितलो 20 रुपया घातला हालेलुया सुट्टी करी गेली तुमकां म्हजे 20 रुपया पिडाक दिले हालेलुया म्हजे भाव भयणींनो My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों बेश्टेच उतर आयकोन आयकोपाचें जायनाका do not just listen to the word and be just the hearer of the word. वचन को सुनकर सुनने वाले मत बनो तुका मुकुट मेवला You have received the crown. आपको मुकुट मिला है तो मुकुट शाइन जावं दी चक्का 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 जावं दी शाइन जावं दी Let that crown shine. वो मुकुट चमकने दो केन्ना जाता When does it shine? कब होता है आतां सिस्टर वाचून दाखला ब्लेमलेस You ought to be blameless. ब्लेमलेस स्वत नाहलो आसूंक जाय देवाक मानवता तो आसूंक जाय खुपाचेर पावतलो जे क्रिस्ता सांगता जी येतलो स्वर्गार आसतलो स्वर्गाचे राजवटी चलयता शिंहासनाचेर बसून आसतलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया जेजू क्रिस्ता कारगा